हेलो एवरीवन। आज हम फेमिनिज्म की बात करेंगे। पहले तो आप ये जान लो कि फेमिनिज्म जो होता है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ महिलाओं के राइट्स की बात की जाती है। कोई बात नहीं इसमें कि हम महिलाओं को डोमिनेंट स्पेस देते हैं यहाँ पे फेमिनिज्म में। बट इसके अलावा ट्रांसजेंडर अदर जेंडर्स जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे इनइक्वालिटी है, वहाँ फेमिनिज्म स्टैंड करता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टैंस, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टैंस, it's kind of theory that deals with gender as a subject and gender equality. It can be any gender. So feminism has expanded itself to any gender which is facing inequality. So feminist writers actually they began with women rights, but now they talk about transgender rights as well, and the rights of nature. Eco-criticism also has been the part of feminism very much now. So first we'll talk about the books, which are very important books, which you need to keep in memory so that you can answer in exams and before interviewers if you face any interview. Let's talk about 4 5 books first. The books which are very important. Mary Wollstonecraft's book A Vindication of the Rights of Women that was published in 1792. This is considered to be the pioneer of feminism. We have Oliver Syrens' Women and Labor that was published in 1911. We have Virginia Woolf's A Room of One's Own 1929. We have Simon de Beauvoir's The Second Sex 1949. We have two male writers also talking about women equality and rights. We have J.S. Mill, John Stuart Mill, The Subjection of Women 1869. We have Frederick Engels, The Origin of the Family 1884. These are the books. Now, if we talk about actually, you know, the waves, I must say, I have written here it's a 3 waves. Yeah, of course, there were 3 waves, but now it has 4 waves of feminism that we need to keep in mind. So here it is 4 phases, 4 waves. The first wave is political, the second wave is cultural, the third wave is academic, and the fourth wave is digital activism. So the 4 waves are there in feminism now. Earlier it used to be 3 waves, but in the modern times we also have one more wave that is called the digital activism wave, and that is very much related to internet activities, the social media platforms. So let's go for first the first wave feminism that began in 19th and 20th century in the countries like US and UK as a struggle for equality and property rights for women by suffrage group and activist organizations. सो फर्स्ट वे फेमिनिज्म एक्चुअली बात क्या करता है कि हमें वोटिंग राइट्स दीजिए, हमें भी रिकॉग्नाइज करिए एक नागरिक के रूप में. सो फर्स्ट यू नीड टू गो फॉर द पॉलिटिकल राइट्स. इफ यू डोंट हैव पॉलिटिकल राइट्स सो यू कैन नॉट गो फॉर एनी अदर राइट्स. सो पॉलिटिकल राइट्स फर्स्ट वे फेमिनिज्म की बात करता है, और इसमें इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हमारा है अ रूम ऑफ वंस ओन 1929. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट अ रूम ऑफ वंस ओन. ये जूडिथ शेक्सपियर की बात करता है, और ये कहता है कि जूडिथ शेक्सपियर अगर शेक्सपियर की बहन होती तो शायद उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता जैसे शेक्सपियर को मिला, जस्ट बिकॉज ही वाज अ मेल एंड जूडिथ इज अ फीमेल हियर. सो जूडिथ शेक्सपियर इज एक्चुअली एन इमेजिनरी कैरेक्टर as a sister of Shakespeare, but it is talking about the discrimination which exists in the society. That's what it is. A Room of One's Own. It's very famous for this, and the very much a book of first wave of feminism. Then we have second wave of feminism that was in 1960s and 1970s, which was characterized by a critique of patriarchy and constructing the cultural identity of women. Simon de Beauvoir actually wrote in The Second Sex 1949 that one is not born but rather becomes a woman. It means somewhere it is the social construct. It's not a woman is born a woman, rather it's a society which constructs, and the attributes, the qualities which are given to them is not because they are born with those qualities, it's because society expects them to behave in the particular manner, and these women are supposed to adopt those things. And that's how it is a social construct. The very idea of womanhood, femininity is construct, it's not the reality. This is what second wave of feminism talks about. It is talking about cultural representation which has been very negative about womankind. So the second wave of feminism wanted to change the cultural representation. फर्स्ट वेव हमने बताया पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट्स की बात करते हैं. सेकेंड वेव ये कहते हैं कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन आपने करा है ना, गलत तरीके से किया है,
वीमेन ऐसी होती है, वीमेन ऐसी होती है, गलत तरीके से वीमेन ऐसी होती, पैदा ऐसी नहीं होती हैं, बल्कि आप उन्हें ऐसा बना देते हो। बचपन से आप उनकी ट्रेनिंग इस तरह से करते हो कि वो पर्टिकुलर क्वालिटीज़ करें, उनके अंदर आएँ, डोमेस्टिक क्वालिटीज़ आएँ, ना कि पब्लिक स्फीयर में वो कुछ कुछ करने लायक बचें। सो वो चीज़ को ख़त्म करना है, कल्चरली जो उनका रिप्रेजेंटेशन है उसे चेंज करना है। ये बताना है कि वीमेन वो नहीं होती जो आपने बुक्स में लिखा हुआ है, रेदर वी हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर वीमेन एंड इस डेफिनेशन को चेंज करना है। दे आर नॉट लेस, दे आर नॉट somewhere subordinate to men, rather they have their own individual identities and they can have equal rights and equal intellect as men have. So let's go for the books which are famous for the second wave of feminism. We have Kate Miller's The Sexual Politics that was published in 1969. We have Betty Friedan's The Feminine Mystique that was published in 1963. Thinking About Women that was published in 1968. So दो फेमिनिज्म हमने with दो वेव्स पढ़ लिए, थर्ड वेव में आते हैं। थर्ड वेव एक्चुअली पोस्ट 1980 है और ये डिस्कोर्स के लेवल पे है। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एसोसिएशंस विद मार्क्सिज्म, साइकोएनालिसिस, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीलिंग विद इश्यूज लाइक लैंग्वेज, राइटिंग, सेक्सुअलिटी, रिप्रेजेंटेशन, एटसेट्रा। तो थर्ड वेव इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कोर्स की बात करता है, एसोसिएशंस की बात करता है, थियरी लेवल पे बात करता है। आप कह सकते हो इट्स थर्ड वेव इज वेरी मच an academic kind of representation. So first one was political, second one is cultural representation, third one is academic, which is talking about interdisciplinary associations, where we talk about alternate sexualities, where we talk about ecological studies, where we also talk about post colonialism, because यहाँ पे सबके साथ सप्रेस किया गया है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में भी लोग सप्रेस हुए थे, इकोलॉजिकल में भी आप इकोलॉजिकली तरीके से आपने नेचर को ख़त्म किया था, और ट्रांसजेंडर के साथ भी आप गलत कर रहे, तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं थर्ड वेव में डिस्कस की गई हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द फाइनल वन दैट इज फोर्थ वेव इज अ मॉडर्न वन। इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द इंटरनेट एरा एंड इट इज़ कॉल्ड डिजिटल एक्टिविज्म, बिकॉज यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो बहुत नेगेटिव लाइट में हुआ है। इट डील्स विद सेक्सुअल हरासमेंट, बॉडी शेमिंग, रेप कल्चर, and for this purpose, to highlight these issues, they have used hashtags and online campaigns to challenge sexism and promote women's empowerment. I hope you understand the brief of feminism and the books and the four waves. Thank you very much for today. We will continue with the lectures in the coming days. Bye bye.